नियम 377 के अधीन सभा पट पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों का उठाने की अनुमति प्रदान की है वे अपने मामलों को अनुमोदित पाठ की 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखे दें। धन्यवाद। आइटम नंबर 18 और 19 श्री इम्तियाज जलील। शुक्रिया, आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं महाराष्ट्र के एक मराठवाड़ा इलाके से आता हूं, जिसे हम सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब सरकार के अंदर आए थे तो आपने ये दावा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी होने की बजाय उनकी आत्महत्या किस तरीके से दुगनी, तिगनी और चौगनी हो गई है, ये आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान का एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, सिर्फ उसी के आंकड़े में बताना चाहता हूं, मराठवाड़ा के। और इस मराठवाड़ा के क्षेत्र में जनवरी से लेकर नवंबर तक 1000 किसानो63 ने आत्महत्या की है, जिसके अंदर औरंगाबाद, जो मेरा चुनावी क्षेत्र आता है, 160 किसानों ने आत्महत्या की, नांदेड़ में 163 किसानों ने, बीड़ में 253 किसानों ने, उस्मानाबाद में 161 किसानों ने। ऐसे कुल मिलाकर सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम किसानों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आखिर ये किसान इतनी आत्महत्या कैसा कर रहे हैं, और सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आप मेरा विकास कैसा कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़ों के साथ। आप इस फाइनेंशियल ईयर में बजटरी एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कितने परसेंट से घटाए हैं, तो 38.3% से आपने माइनॉरिटी का बजट घटाए है। 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट था वो 5020 करोड़ रुपए था, उसको कम करके आपने 3097 करोड़ कर दिया। मुझे मालूम है कि आप हमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद खुश करने के लिए नई नई स्कीम्स लेके आते हैं। आज 10 स्कीम्स आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए हम चलाते हैं, लेकिन उनके लिए फंडिंग, उनके लिए बजट एलोकेशन कैसा घटाया जा रहा है हर साल। आप देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 में ये बजट पिछले साल 1425 करोड़ रुपए था, अब उसको घटाकर महज 433 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब यह है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर आज सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट किसका है, तो हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट है आज स्कूल लेवल के ऊपर, और वो स्कॉलरशिप का भी अमाउंट आपने किस हद तक कम कर दिए थे। मेरिट का मींस बेस्ड स्कॉलरशिप, पिछले साल आपका बजट एलोकेशन कितना था, तो 365 करोड़ रुपए था, उसको घटाकर 365 करोड़ रुपए से आपने सिर्फ 44 करोड़ रुपए के ऊपर लेकर आ गए हैं। दूसरी सारी स्कीम्स है जिसको नाम बड़े खूबसूरत दिए गए हैं, नई उड़ान, नया सवेरा, लेकिन बजट हर टाइम आप कम करते जा रहे हैं और फिर ये नारा लगा रहे हैं कि आप सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महंगाई को लेकर पंतप्रधान जी से मैं आपके जरिए एक सवाल करना चाहता हूं। मैं जयपुर गया था, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे जिसके ऊपर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर थी, उसके बाजू गैस सिलेंडर था, उसके नीचे लिखा हुआ था मोदी की गारंटी 450 रुपये। हम सरकार में आ गए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हम 450 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर बेचेंगे। मैं आपके जरिए मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आदरणीय करार साहब से, आपके महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें नहीं दे रहे हैं, कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 450 रुपये में दे दीजिएगा सिलेंडर। यानी कि आप कम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को आप चुनाव के नजरिए से हमें कैसा फायदा मिल सकता है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में अगर हम बात करें तो हर जगह आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करके रखा हुआ है। इसका फायदा सिर्फ ठेकेदारों को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। EPS 95 के जो पेंशनर्स है, जिन्होंने 20 साल 30 साल काम किया है, आपने भी कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाए हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ पर कल से जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें पेंशन कितनी दी जा रही है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुनिए, 800 रुपये, 1000 रुपये,
1200 रुपये, 1500 रुपये ये पेंशन अमाउंट उनको हर महीना दी जा रही है और उसके जरिए उन्हें ये कहा जा रहा है इतने पैसों के अंदर अगर जी सके तो जियो, नहीं तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, आप गवर्नमेंट रिसीव और कुछ आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूं। अगर पिछले साल की अगर हम तुलना करें, अप्रैल अक्टूबर 22-23 जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल की तुलना उसी पीरियड के अंदर अगर इस साल करते हैं तो जीएसटी ड्रॉप हुआ है 7%, इनकम टैक्स का ड्रॉप हुआ है 2%, कॉर्पोरेशन का ड्रॉप हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स का 5%, टोटल ड्रॉप अगर एवरेज निकालते हैं तो 5% का ये गवर्नमेंट रिसीप्ट्स का हुआ है। उसके तुलना के अंदर अगर एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे सेम पीरियड के अंदर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस बाय 1%, कैपिटल आउटले लेस बाय 4%। तो हमारा आपसे ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स के जरिए आज डिफेंस के बारे में 11,827 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री डिमांड रखा गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी चाइना की पॉलिसी क्या है। 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम खो चुके हैं। डेंगसोंग हमारे हाथ में है क्या, इसका जवाब आप दीजिएगा। इसके ऊपर खामोश क्यों है? चाइना पॉलिसी के बारे में हमारा क्या है अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में बता दीजिएगा, वरना अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर हम सियाचिन को भी खो डालेंगे। आखिरी पॉइंट एक बताना चाहता हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स के अंदर रखा है 11,072 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वेस्ट एशिया की पॉलिसी इस देश की क्या है, ये देश को बताइए। आज हम हिंदुस्तान की सरकार से यह अपील करते हैं कि इस्राइल की हम कड़ी निंदा करते हैं कि फलस्तीनियों के अंदर जो आज 20,000 बच्चों को, सब महिलाओं को जो मारा गया है, 12 लाख लोग बेघर हो गए हैं, जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनकर बैठे हैं और खामोश बैठे हैं। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि फौरन जल्द से जल्द एक कंडन करे इसका और इजराइल गवर्नमेंट को कहे कि फौरन सीज फायर लाया जाए इस मुद्दे के ऊपर। अध्यक्ष महोदय सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दीजिएगा। मैं आपसे ये, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी औरंगाबाद से आते हैं, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा करार साहब कि औरंगाबाद से महज 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर नारायणपुर एक गांव है सर, वहां पे 3,335 ऐसे सिर्फ मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऐसे स्कूल्स है कि जहां पर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप ये दावा कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन इस बार किया गया है। तो ये पैसा जा कहां रहा है, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। Thank you very much, Sri P. Ravindranath. It is already, one second, already decided. The Honorable Finance Minister will reply to the debate by sharp 3. So all other members are requested to conclude the speech by 5 minutes maximum. Please cooperate with the chair. Thank you, Chairperson, sir, for allowing me to speak on the discussion on the demand for grants. Sir, first, let me first of all take the opportunity to thank our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, and our Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, for sanctioning on advance release of 450 crore from the central share of the state disaster relief fund for managing the relief activity in the aftermath of cyclone Michang, and for approving 561 crore for the urban flood mitigation project of Chennai Basin. Let me thank our Home Minister, Sri Amit Shah ji, and Defense Minister, Sri Rajnath Singh ji, for allowing the defense forces and the NDRF for continuously rendering humanitarian aid and rescue assistance to the affected people. Sir, the major flood in Chennai due to the rainfall triggered by cyclone Michang from December 2nd is the third such occurring in the last 8 years. The project funded through the assistance from the Disaster Mitigation Fund will establish a climate resilient urban flood protection infrastructure in Chennai. I wish to request Honorable Finance Minister that the allocation to Chennai may be further enhanced considering the capacity, risk, and exposure of Chennai city. Sir, I would like to draw the attention on the serious disruption faced by the textile industry in Tamil Nadu due to the escalation of prices of cotton and yarn. A large number of spinning, weaving, and garment units hence face the danger of closure. I wish to request the government
to initiate the following steps to rein in the price rise. As an immediate measure, stock declaration of cotton and yarn may be made mandatory for all spinning mills so that the ginner and cotton trader can obtain actual data on cotton and yarn availability. The removal of import duty on extra long staple cotton, if done, can ensure the availability of raw material at affordable prices to the industry to a great extent. And the cash credit limit of the spinning mills to purchase cotton may be extended up to 8 months in a year instead of current 3 months due to extended availability of cotton market. Similarly, with regard to the margin money sought by banks, which are currently at 25% of purchase value, I request the same may be reduced to 10%, sir. Sir, another concern is that regard to the severe crisis faced by the government sector in Tamil Nadu, Tirupur, which is one India's largest knitwear exporting cluster, is 95% constituted by the MSMEs. Due to the economic slowdown in the West, these units are facing huge financial crisis. Lakhs of jobs, including the significant share of rural women, which form a major share of the workforce, is facing a danger of being unemployed. I wish to request the government to announce special emergency credit line guarantee scheme for the MSME sector, especially in the government sector, so that they survive this crisis, sir. Sir, India has been the world fastest growing major economy in the last 2 years. It is also forecast to retain the top spot in 2024 as the urbanization and industrialization process reaches the rapid takeoff phase. Sir, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, has always championed the role of youth in India's development. In line with his vision, Viksit Bharat at 2047, initiative that has been launched, providing a platform for the youth of our country to contribute towards making India a developed nation by 2047 in the 100 year of its independence. Sir. Yes. Our government has launched various schemes and initiatives to support the youth and provide them with the necessary resources to succeed. It is now up to the youth to take advantage of this opportunity and contribute positively to the development of our nation, sir. Thank you. Sir, I will finish in 2 minutes. Sir, on the agricultural front, there is an estimated 45.8% of labor released from this sector in 22-23 as per the periodic labor force surveys report, which means going forward, non-agricultural growth will have to be high enough to absorb this labor, and our economic policies should be aligned to facilitate this Now, absorption please. along with the labor substituting impact of new technology. I wish to conclude by mentioning that focus should not only be on improving the economic indicators, but there is an increasing challenge of pollution and climate change. Sir, the severe air pollution in Delhi and Please. other major urban areas is going to considerably reduce the life expectancy of our citizens, which impacts the socio-economic indicators of our country in the long run. Similarly, urbanization, industrialization, and rapidly increasing incomes, especially in the middle class, will drive an enormous increase in demand for energy service. Now, there please will conclude. be more demand for power, for air conditioning, Shri Sushil lighting, Kumar and Rinku. appliances as well. Sir, 1 minute, I finish it, sir. No, Sir, please. as well as more liquid fuels or electricity. Sir, sir, Indians' urban population contributes 63% to the GDP, which is expected to rise to 75% by 2030, sir. Sir, I wish to request that there should be dedicated budgeting to address the Thank you. vulnerability to Sushil climate Kumar. change impacts such as extreme weather events, rising sea level, and challenging rainfall pattern. Recent floods in Chennai is an example, and there should be much higher spending on preventing such Sushil climate Kumar Rinku. impact in comparison to managing a disaster after it impacts. Thank you very much. Thank you. Thank you, Shri Sushil Kumar Rinku ji. Mike, you press the button, please. White button. Yeah. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਰ ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆਦਮਪੁਰ, ਫਲੋਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਨਕੋਦਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਿਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਕਰੀਬ 5,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਨੀय ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 660 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਏਗੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ MDF ਦਾ ਕਰੀਬ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। धन्यवाद श्री राजमोहन उन्नीतन। Sir, respected Speaker, sir, I strongly oppose the supplementary demand for grant. Political philosopher Niccolo Machiavelli warned that a prince who is without any wisdom himself cannot be well advised. Our Prime Minister is an unwise prince who can never be well advised. One of the major functions of Parliament is to advise the executive branch, but as the prince is unwise, the advice goes fruitless. We have heard "Achhe din aane wala hai" since the 2014 election season, and with the railway fare, freight rate, petrol and diesel, sugar and LPG rates hike, is the government doing what it had promised? Interestingly, the All India Anti-Corruption and Citizen Welfare Core Committee had filed a bill in the Bombay High Court alleging a criminal breach of trust by the Modi government over the increase in railway tickets and other commodities prices. Although the plea was rejected by the court, the Modi government is being blamed for fulfilling its promises and breaking people's trust. Sir, the dream of the third largest economy in the world with 5 trillion GDP by 2030 is a great one. But let us examine and compare the GDP of countries with the first and second GDP. USA hold the first largest GDP of 25 million US dollars now. The US population is only 34 crores. See how big is the per capita income and hence the standard of living in the US. The second highest GDP is that of China with 18 trillion US dollars. Of course, the second largest population in the world, 142.57 crores, makes per capita income and standard of living very low compared with the US. What is the percent GDP level of India? It is only 3.7 trillion, whereas India holds the largest population in the world, 142.86 crores. What would be the per capita income compared with the US and China? Sir, foreign direct investment in retail trade has almost spoiled the micro, small and medium enterprises. 5 trillion GDP if shared among the corporates. What is the inclusive growth strategy? Sir,
the National Health Policy 2017 mandates that the health expenditure should be raised to 8% of the GSDP of the states by 2022 and 2.5% of the GDP by the center by 2022. But in the 2023-24 budget, the center has allocated only 1.97 of the total expenditure, which is less than 1% of the GDP. Remember, the floating dead bodies on the river during COVID-19. So please, more funds as supplementary grants. When countries like China spend 5 to 6% of the GDP on education, India allocate just 2.50 of the total expenditure on education, not of GDP. The dropout rate is on the increase, which is alarmingly high among the SC/ST students. It would be remembered that the educated and skilled youth are a dividend of the country, not the unemployment illiterates. India continues to grapple with the persistent unemployment concerns marked by fluctuations evident across various regions and sectors. According to a recent Bloomberg report citing data from the Center of Monitoring Indian Economy for July, the national unemployment rate stands 7.95% as of July 2023. Sir, agriculture, which is India's largest private sector, is burdened with an archaic business model suffering from government controls. The farmer must be able to leverage land, labor, and capital like any other entrepreneur to be viable, but lacks access to affordable credit, a reliable supply chain of inputs, Yes. and access to market. Just one. In 2020, over 10,677 farmers, that is 29 in a day, or over every hour, committed suicide, and estimate price culminate figure for 1 decade at over 4 lakhs. Sir, agriculture input prices have to be raised in the maximum. Now farmers are given fees of 6,000, which they will utilize not on agriculture but on other essentials. Now, 10 please. crore poor families are given cooking gas connection with cylinders, but a cylinder at the rate of 910 cannot be afforded by them, sir, because of the changes in the norms by the 15th Finance Commission. Kerala's share from the divisible pool declined from 2.5, sir, in the 14th Finance Commission to 1.93. Yes. In the 15th Finance Commission, only one word, Commission, and hence the state under severe fiscal stress. The 60 years population is comparatively high in Kerala. A minimum grant of 10,000 crores is necessary to address the geriatric care, sir. Thank you. Policies without, only one line, policies without principle is one of the 7 deadly signs, according to Mahatma Gandhi. Sir, I am sorry to say that the Modi Sarkar is the epitome of politics without principle. Thank you very much, sir. Thank you, Shri Badruddin Ajmal ji. आपने मुझे इस सप्लीमेंट्री बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। हम इसके सपोर्ट में हैं क्योंकि ये इलेक्शन बजट है, तो हमको भी इलेक्शन में जाना है, तो इसलिए सबको अपने अपने हिसाब से बोलना ही पड़ेगा। सर, मेरा पहला डिमांड है, आई डिमांड एलोकेशन ऑफ फंड टू कंट्रोल फ्लड एंड इरोशन in Assam, especially in Fakirganj, South Salmara, Mankachar, Tolashar, Gwalpada, Dhubri and Bilasipara, etc. And number 2, fund for construction of 4-lane national highway in Borpeta, starting from Amingaon, Guwahati to North Salmara via Jonia, Borpeta in Assam state. Fund to allotment. Number 3, fund for establishment of central universities and medical colleges in Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipara, Gwalpada, Borpeta, Nagaon, Karimganj, and Hojai. Fund for setting up hospitals in Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipara, Gwalpada, Borpeta, Nagaon, Hojai, and Karimganj. Number 5, fund for construction of newly railway line from Bangaigaon, Abhaipuri
to Amingaon, Guwahati via Jonia and Borpeta town. Number 6, fund for construction of RCC bridges over Brahmaputra River at Borpeta district, either Bamungaon, Dongra to Kolbabata or Bahari to Kusumai in Borpeta. Fund for construction of RCC bridge over Beki River at Majidesar, बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, इसको जरूर हो जाना चाहिए. मस्जिद भाटिया और चिकनी. नंबर 8, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी ब्रिज ओवर जेजाली रिवर at Bangamara in Silmantala, Alupati to Noga Nagarbada and Sai Salmara to Dholonga. Number 9, fund for construction of RCC bridges starting from Bangamara Char to Simintala Bazaar. Sir, number 10, my demand, fund for construction of RCC bridge starting from Chaimara to Dolgoma. Fund for construction of RCC bridges starting from Madhachar to Nagarbera. Fund for construction of RCC bridge starting from Uttarchar, Mohakwa to Dekhakawa. Number 11, number 13, construction of RCC bridge starting from North Bank, Hypergaon to South Bank, Kholsabanda over River Brahmaputra. Number 14, fund for setting up jute industry in Dhubri, Gwalpada, Mankachar, South Palmara. Number 15, fund for setting up heavy industries in Assam, especially Dhubri, South Salmara, Mankachar, Vilasipada, Gwalpada, Borpeta, Hojai, Nagaon, etc. Sir, thank you very much for giving me the opportunity. We are in support of this bill. Thank you very much. Next speaker, Sri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Sir, I rise to oppose the way the supplementary demands for grants has been laid on the table. It is a reflection of the lack of government's mission and poverty of vision. Sir, in the supplementary demands for grants, it contains 79 demands and 4 appropriations, gross additional expenditure rupees 129,348.85 crore, net cash outgo 58,378.21 crore, savings received recoveries 70968 crore. Sir, the issue is that सुबह से शाम तक सदन में हम ये सुनते आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी, ये नया नारा अभी शुरू हो गए हैं. पहले था मोदी है तो मुमकिन है, अभी नारा बदल चुके हैं, मोदी की गारंटी आ गए. तो ये नारे की सरकार आम लोगों के लिए, इन लोगों की चिंता करने की नहीं है कोई दरकार. सर, बात यह है कि ये गारंटी किस पे, हर चीज अगर जब गारंटी दिया जाते हैं तो गारंटी की एक वारंटी पीरियड भी होते हैं. तो ये गारंटी के साथ क्या वारंटी पीरियड है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कह गए थे कि 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलेगा, वो गारंटी खो गए. कभी ये कह गए थे कि बाहर से काले धन लाकर हर लोगों की जेब में 15 रुपया डाला जाएगा, वो गारंटी चले गए. ये कह गए थे कि नोटबंदी के चलते सारे ब्लैक मनी बैंक में वापस आ जाएगी, 99.68% सफेद मनी आ गए. तो ये गारंटी ही गारंटी है, लेकिन इस गारंटी के साथ कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार कहते हैं कि हम इस जमाने में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे और 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनेंगे और महान कंट्री बनाने के लिए 1000 साल लग जाएगी. तो हम क्या गारंटी के लिए क्या 1000 साल हम इंतजार करें? ये अभी हमारे साथ में कुछ आए, इसके लिए मैं आप लोगों के बारे में कुछ कहे. सर, बात इसलिए कह रहा हूं, कल हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जी कह रहे थे कि 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन हो गए मार्केट की कैपिटलाइजेशन. ठीक है, द यूफोरिया, आई वुड लाइक टू कोट Raghuram Rajan ji, I quote, the euphoria on Dalal Street with India joining the elite group of countries with 4 trillion market capitalization and Sensex hitting all-time record high level is not a good indicator
of broader economic success, argues former RBI governor. In the just released book, Breaking the Mold, Rajan and economist Lohit Lamba say that the stock market offers a misleading picture of the broader economy, as the big are getting bigger and small ones are getting smaller. For a variety of reasons, including demonetization, the pandemic, and the implementation of GST, we have seen an increase in the profitability of large firms in the country, while small and informal firms are doing relatively poorly, but only the former are quoted on the stock market, which offers a misleading picture of the broader economy. Sir, आप तो नहीं मानोगे रघुराम राजन का कहते हैं, क्योंकि सुबह से शाम सारे सदन गूंजते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मोदी जी के साथ हमारे कोई देश नहीं है, मोदी जी के साथ हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहते हैं कि सुबह शाम जब धर्म मानने वाला लोग होते हैं तो कभी गीता पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, तो कभी कुरान की पाठ करते हैं। तो सदन के आने के पहले अब मोदी स्तुतिकरण, मोदी पाठ करने के बाद सदन में आया करो, क्योंकि हर व्यक्ति जो चर्चा में शामिल होते हैं कम से कम 10% समय मोदी जी की गुणगान करने के लिए ये अपने तरफ से नहीं, ये नहीं सर, मैं सलाह देते हैं, सलाह कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उस समय दूसरे काम में लग सकते हैं। सर मैं सर I would like to draw your attention on a very pertinent issue. One of the main aims of awarding contracts to the MSME sector through the MSME portal is to ostensibly to promote small enterprises for bringing about transparency in tendering process and to meet the ends of Atmanirbhar Bharat. As per the system currently being followed, small enterprises which bid for and secure contracts through the GEM portal have to pay a fee of 0.5% of the contracted amount. Thus, a person or an enterprise who secures a contract of say rupees 10 crore will have to immediately pay up a fee of rupees 10 lakhs. This amount of fee, you must appreciate, is substantial for a small enterprise and would only eat up the capital of the small entrepreneur or the firm. The simple point that is being made is that the fee of taking up the contracted item of work through the GEM portal should not be such that it would be a burden for the small enterprises, ends up eating into the likely profit margin and does not contribute to making the country Atmanirbhar. For enabling in serving the purpose of or goal of promoting small enterprises, I would suggest that the government do away with the current system of upfront payment of 0.5% of the contracted amount immediately by the enterprise concerned. Instead, a more viable and objective method of charging fees for the contracted amount on the portal could be introduced by way of having a graded or slab-wise system of fees prescribed starting from a contract amount of rupees 50 crore. A slab-wise system of the fee prescribed for contracted amounts of rupees 50 crore and above will go a long way in helping the small enterprises and entrepreneurs by saving on their capital and improving their profit margin. मैडम, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 200 करोड़ से ज्यादा अगर कोई एंटरप्रेन्योर होते हो जीएम पोर्टल में, उनको शामिल होने की जरूरत नहीं। मतलब सबसे ज्यादा असर एमएसएमई सेक्टर में होते हैं। आप एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय व्हील चेयर में बैठा देते हो, तो इसलिए मैं आपको संज्ञान में ये मुद्दा रख रहे हैं। मैडम, ये कहे जाते हैं कि हमारी देश तरक्की कर रहे हैं रोजाना, हमारे रोजाना ट्रिलियन डॉलर की बात सुनते सुनते मुंगेरी लाल की सुनहरी सपने की याद आते हैं। तो मैं आपको ध्यान में रखना चाहते हैं, टू बेटर अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ फूड इन्फ्लेशन, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल releases a monthly rice and roti report that tracks price changes of the various commodities used to prepare a vegetarian and a non-vegetarian thali. Madam, the cost of a vegetarian thali rose
by 24% to rupees 33.8, and that of non-vegetarian thali by 13% to rupees 67.3 in August as compared to the same period in the last year. The inflationary pressure from rising food prices and uptick in the price of fuel and depreciating rupee has resulted in the people relying on their savings to meet their consumption needs. The net household savings of Indians dropped to a 5-decade low. मैडम, मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये हमारी देश की आम लोगों को खर्चा करने की पैरामीटर क्या है, उनकी आज का ताजा हालत क्या है। A survey that would enable us to adequately gauge how much money people spend on their consumption needs. The Consumer Expenditure Survey has been carried out by your government, but its findings have been withheld. The results for 22-23 and 23-24 CES are likely to come only after the 2024 elections. The findings of a similar exercise done by the government in 2017 and 2018 were also withheld, but the leaked data had shown a rise in poverty levels and a 45-year high in unemployment. I do not know whether Madam will be subscribing to my view or not, but the issue is, एक छोटी सी बात आपको कहना चाहती मैडम, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मोदी की विकसित गाड़ी चलते हैं और काफी रफ्तार चलते हैं आप लोगों की कहने के मुताबिक, तो आपको 5 साल की मुफ्त रेशन की गारंटी देने की क्या जरूरत होती है? अब बताइए, क्या जरूरत होते हैं? अगर सब कुछ ठीक ठाक चलते हैं तो ये इतने सारे रेबड़ी की बात जो कह रहे थे, और रेबड़ी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों बेचैन रहते हैं? क्योंकि वो खुद रेबड़ी देने में आज काफी अग्रसर हो चुके हैं। तो मैडम, ये 2-4 बात आपको कहना चाहते हैं कि आप देखिए, आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है? 111 आउट ऑफ 125 countries. What does it indicate? The per capita income vis-a-vis GDP now is 138 in the world. 2023 trade deficit hit a record high of USD 31.46 billion. That means our economy is besmirched is beleaguered by high inflation, unstable rupee, and current account deficit. Normal GDP हमारा 5th, PPP में 3rd, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा देश की पर कैपिटा इनकम आप देखिए, नॉमिनल में 2612, जब PPP होते हैं 9183 होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि आम लोगों को गुमराह करना कोई सरकार की काम नहीं हो सकता, तो इसलिए सरकार इससे बाज रहे। रोजाना लोगों को जीडीपी की कहानी सुनाए जाते हैं, लेकिन लोगों की जेब की हालत क्या है, लोगों की घर की हालत क्या है, लोगों की पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ते हैं, इसके लिए आपको सही कोई दिशा दिखाने में आप विफल रही है। आप कहते हैं कि हमारा इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो गए और 3rd लार्जेस्ट होने जा रहे हैं, लेकिन आप गौर करें मैडम, इंडिया जीडीपी डाटा हैज ह्यूज एरर्स since 2016-17 when demonetization was announced. The unorganized sector has been on the decline, but the official data does not capture it. The organized sector is taken to be a proxy of the non-agriculture unorganized sector. आपने क्या किया? क्रोनी कैपिटलिज्म को मदद किया, और क्रोनी कैपिटलिज्म की मदद के चलते हमारा देश से अभी पलायन होते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहते हैं मैडम, सही ढंग से अगर जवाब आप दोगे तो, ये क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए फ्लाइट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमारा देश में शुरू हो चुके हैं। The resulting damage to the business environment
has led to tens of thousands of high net worth Indians living India since 2014 and lakhs have given up Indian citizenship recently. सही है नहीं, आप बताइए। आपसे मैं जानकारी लेना चाहते हैं कि राइट ऑफ कैपिटल होता है या नहीं, और हमारा देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नीति आयोग का कहना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अभी 4.96% हो गए। रिसेंटली रिलीज मल्टी डायमेंशनल इन पॉवर्टी इंडेक्स बाय यूएनडीपी पुट द फिगर एट 16.4%। ये क्या दर्शाता है? हम जो भी बात करें, देयर इज अ सीमी साइड behind all the hue and cry, behind all the high octane propaganda by this government. अपने ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लाए हैं, इसमें एग्रीकल्चर, इसमें केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को, और इसमें सब्सिडी अब न्यूटन बेस्ड सब्सिडी देने को कह रहे हैं। आपको इतना दिन तक याद नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट DFG probably underestimate the actual cost of the subsidy to the exchequer। मैं ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, ये सरकार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायोकेमिकल फर्टिलाइजर की बात करते हैं। आप सालाना फर्टिलाइजर में सब्सिडी लगभग 1,75,000 करोड़ दे रहे हैं। उसमें हमारा ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर की हिस्सा क्या है? हमारे ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर की हिस्सा क्या है? हमारे जमीन खराब होते जा रहे हैं। हमारे जमीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट ये खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर की जरूरत है। लेकिन बाजार में ये जो ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर मिलता है, वो ज्यादा से ज्यादा नकली, फर्जी मिलते हैं, लेबोरेटरी नहीं है। आप बताइए, आपकी सब्सिडी में ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर के लिए कितना हिस्सा रखे गए हैं? मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप ग्रीन हाइड्रोजन की इस्तेमाल करो, आप ग्रीन अमोनिया की इस्तेमाल करो। इसमें आपको फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, आपको एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट डिजास्टर के ऊपर इसका असर होगी, और आपके लिए ये बढ़िया काम बनने की संभावना लाएगी। सर, इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं सर, हो गया सर, इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं सर कि ये क्रोनिक कैपिटलिज्म की असर क्या होते हैं, मैं दिखाना चाहते हैं सर। ये क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या करते हैं? क्रोनिज्म वीकन्स इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीड्स टू द persistence of black income generation. A decline in the black economy would have led to India's tax GDP ratio to rise. It has remained at about 16 to 17% in the last 10 years. Direct taxes as percentage of GDP has hovered at about 5.5 to 6%. If the black money had been checked, it should have been conservatively risen to 12%. Increased GST collection post-pandemic are being shown as an example of better compliance. But this is expected to high inflation, increase in imports, and growth of the organized sector at the expense of unorganized sector. A large number of fake companies to claim input credits are being detected every month, and official evasion is running into tens of thousands of crores. So sir, मैं ये कहना चाहते हैं, जो बात बाहर कहे जाते हैं, अंदर से उनका काफी फर्क निकलते आते हैं। तो इसलिए मैं और एक सलाह देना चाहते हैं कि आप अगर मुफ्त में रेशन देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा सेंसस आप अपनाते हो? आप पुराने सेंसस अपनाते हो, 2013 की सेंसस अपनाते हो, लेकिन आज 2023 साल हो चुके हैं। तो मतलब पिछले 10 सालों से जो गरीब लोग मुफ्त रेशन से वंचित रह गए, लेकिन आप कुछ नहीं कदम उठाते हो। तो इसलिए मैं मैडम निर्मला सीतारामन जी को उनके दरखास्त करते कि मैडम, आप बहुत कुछ सोचते जरूर है, मैं आपको बड़ा इज्जत करते हैं, लेकिन शिकायत भी एक है आपके खिलाफ। ये शिकायत है, अपनी बेटी की शादी में हमको किसी को न्योता नहीं दिए, एक लड्डू तक नहीं खिलाए। तो एक दिन लड्डू खिलाए हमें, हम अपने बेटी आपका बेटी की बड़ा मंगल कामना करते हैं। तो सर, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जो बात उठे हैं, मैडम इस पे थोड़ा एनलाइटन करे और सही दिशा से देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए मैडम की सोच यहाँ रखे। नमस्कार। माननीय वित्त मंत्री जी, बहुत हो गया, आज बहुत लंबी डिबेट होगी। Thank you, Speaker, sir.
ये फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री से इस साल का sir, in this first batch of supplementary, I want to emphasize on the fact that normally there are 3 supplementaries which come. But पिछले 2-3 साल से हमारी सरकार के आंकड़ा बजट एस्टिमेट के समय से लेकर के आरई स्टेज तक, रिवाइज्ड एस्टिमेट स्टेज तक हम ठीक ठाक आंकड़ा सही करके पार्लियामेंट के टेबल पर रखते हैं, इसीलिए सप्लीमेंट्री इतनी सारे ले आने का आवश्यकता नहीं पड़ता। मैं इसको आपके सामने इसीलिए शुरुआत में ही रख रही हूं। जब सरकार उनके आंकड़ा असेसमेंट बजट के विषय में ज्यादातर ध्यान देकर के जब प्रिपेयर करते हैं, सप्लीमेंट्री में इतने सारी बार आने का आवश्यकता नहीं पड़ता। हमारे पिछले 2-3 साल के रिकॉर्ड में हम 2 ही बार आए हैं और इस बार पहली बार अभी आ रहे हैं। उम्मीद रखती हूं कि दूसरी बार आवश्यकता है तो आऊंगी, मगर तीसरी बार का जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कितने ध्यान से बारीकी विषयों के ऊपर ध्यान रख के हम बजट का प्रिपेयर करते हैं, ये इस हाउस के सामने मैं रखना चाहता हूं। जी हाँ जी सर, इस बजट फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में 79 डिमांड्स रख रहे हैं और 4 अप्रोप्रिएशन का विषय। अप्रोप्रिएशन के विषय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के स्टाफ, household and allowances of the Rashtrapati ji and also the Union Public Service Commission, ये चारों विषयों को अप्रोप्रिएशन में ले आ रहे हैं, जो एकदम आवश्यक है। इसीलिए हम इस विषय को इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में जोड़ रहे हैं। The gross additional expenditure is about 1.29 lakh crores, and of this the net cash outgo is estimated to be 58,378 crores. So from the net cash outgo, sir, 53,858 crores shall go under the revenue section and 4,520 crores under the capital section. So ये 1.29 lakh crores जो हमारी मांग है, फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स में हम जो ले आ रहे हैं, इस गोइंग आउट इन 4 डिफरेंट हेड्स। पहला 58,378 crores एडिशनल कैश आउटगो है, 70,968.15 crore is technical supplementary, and this is matched by the surrender of savings in different sections with the demand or enhanced receipts, recoveries, and so on. And about 2.49 crores token supplementary to enable reappropriation of funds towards items of greater priority. ये टेक्निकल डिटेल हाउस के सामने मैं रख रही हूं और इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूं श्री पिनाकी मिश्रा जी का, क्योंकि वो इतना सरकार के बजट प्रक्रिया के ऊपर he had some kind words to say, particularly on the fiscal management. मैं सभी सांसद गण को ये विषय सामने रखना चाहती हूं कि फिस्कल मैटर्स में गाइडेंस ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी is based out of his experience of managing budgets in his then state Gujarat and now for the country. So fiscal prudence has been kept top of the priority, and at the same time not denying any welfare funds. So the गरीब को देखभाल करते हुए
फिस्कल प्रूडेंस को, और जहां फुसूल में खर्च होता है और वैसे पैसा बैठकर रहता है, ग्राउंड में नहीं चलती है, वो सबको ठीक ठाक संभालने के कारण आज हमारे इकोनॉमी इतना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में सही रास्ते पर चल रही है। इसी के कारण हम सबसे ज्यादा तेज रफ्तार में ग्रो करने वाले एक इकोनॉमी है। 7.6% का Q2 का हमारी ग्रोथ सबसे दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। सर, ब्रीफ समरी के नाते मैं बोलना चाहती हूँ, इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जो पैसा हम लेते हैं वो किस कारण ले रहे हैं, आपके अनुमति से क्यों ले रहे हैं, किस हेड पर जाना आवश्यक होगा इस पैसा का। सर, हमारे आदिर रंजन जी बात बोले न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के ऊपर, उसके ऊपर इस सरकार पूरे ध्यान दे रहे हैं आदिर जी। इसीलिए इस बजट में 16,000 ठीक है 16,300 करोड़ का हम अभी न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी के लिए पैसा ले रहे हैं। This is being funded through cash supplementary and savings from the demand. Sir, capital infusion में पिछले 4 साल से हर बजट के डिस्कशन में बीएसएनएल के ऊपर सभी माननीय सांसदगण का ध्यान जाती है कि हमारे बीएसएनएल को क्या हो रही है, आप उसके लिए कुछ कर रही है, नहीं कर रहे हैं। और विपक्ष के आरोप तक है कि बीएसएनएल को आप सेल करने के लिए इरादा रख रही हो। मैं हर बजट में बीएसएनएल के लिए प्रावधान करते आ रही हूं और अभी भी 850 करोड़ रुपया बीएसएनएल के लिए कैपिटल इन्फ्यूशन कर रहे हैं। बीएसएनएल को ध्यान रखने वाले मोदी जी की सरकार है और पिछले सरकार बीएसएनएल के लिए क्या नहीं करना था और क्या नहीं किया उसके बारे में हर बजट स्पीच में हमने जिक्र भी किया कि बीएसएनएल के बुरी हालात का प्राइमरी कारण 10 साल था यूपीए के सरकार में, जहां उसको दरकिनारे करके बीएसएनएल का प्रोग्रेस के लिए कुछ भी नहीं किया। मगर हम हर बजट में कुछ ना कुछ देते आ रहे हैं और इस सप्लीमेंट्री डिमांड में भी 11,850 करोड़ रुपया कैपिटल इन्फ्यूशन बीएसएनएल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए भी अलग से पैसा 1000 इससे ही 1434 करोड़ जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए 1434 करोड़ और जो वायदा गरीब लोगों के लिए हमने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 साल तक ये मुफ्त अनाज रेशन में दे रहे हैं, उसके लिए 5,500 करोड़ रुपया इसके द्वारा इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स के द्वारा हम दे रहे हैं। फिर ये उज्ज्वला योजना का नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इंक्रीज करने के लिए जो प्रॉमिस था, जो वायदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके लिए 8,500 करोड़ दे रहे हैं, जिससे एलपीजी कनेक्शन गरीब के हाउस होल्ड तक जाए और पूरा सैचुरेशन हो जाए, जिससे एक भी गरीब ऐसे गरीब ना होना चाहिए जिनके लिए वो एलपीजी उज्ज्वला मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, ऐसे आरोप नहीं होगा। सभी लोगों को जो उज्ज्वला बेनिफिशियरी होने का उनका है क्षमता, उनके पास सिलेंडर पहुंच जाएगा। फिर सर बार बार मनरेगा के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि हम इतना पैसा नहीं देते मनरेगा के लिए। आदिर जी बार बार भी उठाया इस मामले को। मैं उन्हीं के स्कीम है और बोलते हैं कि हमें क्रेडिट नहीं देते हैं। मैं क्रेडिट देना चाहती हूं उनको, मगर वो बोलते हैं उनके स्कीम के प्राइमरी फोकस डिमांड बेस्ड स्कीम है। वो डिमांड जब उठेगा तब उनके लिए हम पैसा देंगे। 60,000 करोड़ बजट एस्टिमेट के समय हमने दिया और अभी डिमांड आने के कारण 20,000 अभी भी दे रहे हैं, 20,000 करोड़। सो कुल मिलाकर के इस साल दिसंबर तक उनके लिए
अगर अनुमति इस लोकसभा से मिलती है 20,000 करोड़ का, कुल मिलाकर के 80,000 करोड़ मनरेगा के लिए इस हाउस से बजट में प्रावधान मिल रही है। और कोविड के समय में भी माननीय सांसदगण को याद होगा कि उस समय जब जरूरत पड़ा 1 लाख के ऊपर ही मनरेगा के लिए पैसा हमने बजट के द्वारा दिया है। जब डिमांड उठते हैं तब हम तुरंत उसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए एडिशनल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सेंट्रल असिस्टेंस और रिसोर्स गैप मीट करने के लिए JNK सरकार से मांग आया, इसीलिए उनको 3,170 रुपया इस बजट के द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड के द्वारा हम दे रहे हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो PM विश्वकर्मा योजना, जिसमें 18 ऐसे ग्रामीण स्तर से हाथों को उपयोग करके जो अच्छा चीज बनाते हैं, लोहार हो, सोनार हो, उन सब के लिए 18 ऐसे ट्रेड्स के लिए प्रधानमंत्री जी लाल किले से 15 अगस्त 2023 में घोषणा जो किया PM विश्वकर्मा स्कीम का लॉन्च, उसके लिए 989.52 करोड़ इस साल प्रावधान कर रहे हैं। इसके साथ सर एक्सेस ग्रांट का भी एक बिल आपके सामने है। वो 2020-2021 में जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ उसके लिए ऑडिट वगैरह होने के बाद हम अभी आपके सामने आ रहे हैं। उसका भी 1,18,651 करोड़ का एक्सपेंडिचर इन 2 ग्रांट्स एंड 1 अप्रोप्रिएशन हम आपके सामने रख रहे हैं। एक्सेस एक्सपेंडिचर जो हुआ उसके विवरण में मैं नहीं जा रही हूँ, इससे टाइम और लग जाएगा, इसीलिए मेंबर्स का प्रश्न के ऊपर जवाब उसके समय पर मैं देना चाहती हूँ। एक्सेस एक्सपेंडिचर का विवरण जो पेपर्स शेयर हुआ है मेंबर्स के साथ, उसमें विवरण है। सर, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, उसके ऊपर बहुत सारे मेंबर्स बात की और उसमें बहुत वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर सौगता राय बात की है, मगर वो अभी हाउस में नहीं है, इसीलिए उनका जवाब आपके पहले के ऑर्डर के याद है मुझे, इसीलिए आई एम नॉट आंसरिंग हिम, although he had raised a lot of questions which are only half truth and he doesn't come out with details. So मैं मेरे सामने सांसद सुप्रिया सूले जी हैं, उनका विषय को उठाना चाहती हूँ। We certainly have prioritized on balancing the interests of farmers and the interests of consumers. Most often when we do this, we have a situation where when prices go up, you need to have supply side constraints removed, bring all the goods to the market, even if it means that you have to purchase it ad hoc from some large growing areas to the market for the consumer's sake. At this time, we are equally conscious if the price at which we procure from the farmers is adequate or meeting his requirement or not. So it is always a question of balancing between the interests of the farmer and the consumer, but more often inclined towards the farmer because we should not obtain or procure his goods at lower than the MSP, and that concentration has always been there in our minds. But for goods which don't, or farm products which don't have an MSP declared, it's constantly searching for the right fair price, which is determined by the market forces rather than we as government determining it. So as a result, I want to say, particularly in food grain prices, you find that the inflation had come down to 4.87 as of October 2023.
more than five-fold rise in the Union Agriculture budget of 1.25 lakh crores from 21,900 crores where it was in 2013-14. Honorable member also raised the issue of the uncertainties in the export and banning of exports. Sometimes you allow exports, sometimes you don't. So as a result of this fluctuating policies, you have a situation where farmers, particularly those who are growing onions, do have an issue saying if they are able to fetch a better price by exporting, but by banning that export, we are denying them that opportunity to get a better price. I understand the concern, but if there are crop shortages and if there are difficulties of getting something as essential as onion to the market, we will have to ensure that the Indian consumers get that priority, and therefore sometimes we need to come up with these measures. But I quite understand the sentiment with which Member Supriya Sule has spoken. But the increase in MSP, sir, itself helps us to address the issue of, or the concerns of the farmers. I want to highlight that the increase in MSPs, particularly latest increase for the Rabi marketing season of 24-25. I name the crops and then also say MSP, which existed in 2014-15, compare that with the MSP of 24-25, and therefore what is the increase? Example, I start with wheat. In 2014-15, the MSP for Rabi marketing season was 1,400 that is rupees quintal per quintal. MSP Rabi marketing season for 24-25, which is the current Rabi season, is 2,275 rupees per quintal. 1,400 then, 2,275 now. 875 rupees increase, which is 63% increase. Now go for barley, 1,100, now it is 1,850. 68% increase. Gram, 3,100, now it's 5,440. Masoor, 2,950, now it's 6,425 per quintal, which is 118% increase. Rapeseed and mustard, 3,050, now it is 5,650 per quintal, 85% increase. Safflower, 3,000, now it's 5,800, 93% increase. So the MSP itself has increased manifold between 2014 and now. So taking care of the farmers, that is. And then we have not just increased the MSP, but we also procure from the farmers, and therefore money goes directly into the hands of the farmers. I would like to highlight the wheat procurement, which will be of interest for the Honorable Minister who is now saying something. Wheat procurement, Honorable Member, who is from Punjab, I would like to place this number before you. MSP payment for wheat, 2006 to 14, Honorable Member, through the Speaker, I would like to inform you, 2.39 lakh crores is all that went to the farmers. Now, 4.52 lakh crores, 2 times more, is going to the farmers who are growing wheat, be they in Punjab, be they in Haryana, be they in Madhya Pradesh. Similarly, pulses, 1.52 lakh metric tons were procured in 2014. Now, 2023, 82.21 lakh metric tons, 54 times increase in the procurement of pulses. MSP for paddy, 3.09 lakh crores went out to the farmers into their accounts directly in 2006 to 2014. Now, between 14 to 22, if you see the difference, it is 10.06 lakh crores, 3.3 times more money goes, MSP goes for the paddy farmers. Sir,
Shri Dinesh Chandra Yadav, I'm not sure if he's here. If he's not here, as per the direction given by the Honorable Speaker, I wouldn't raise the issue. I wouldn't respond to the issue. I can't see the Honorable Member. He's not here. So I move over, sir. वित्त मंत्री जी ने एक एक मेंबर का सीरियस तरीके से नोट किया और एक एक मेंबर का जवाब दे रही है. House. It is the responsibility of the government to respond, though, whether he is present or not. So do I follow your order, old order, or is there a new order, sir? Okay. Sir, again, another member, again, I'm not sure if I'm able to spot, Sushil Kumar Rinku. If the member is here, I'll answer. You are here, so thank you very much. Funds are not being released to Punjab and rural development issues since their government has come to power, is what the allegation was. Sir, I would like to answer to the honorable member. Some scheme guidelines which have been given to for the schemes which go to the states. And when the compliance is not there, due to which releases are not being made, Punjab will perhaps have to go back to check up if they are following the guidelines issued for the schemes as issued. Common reasons, sir, not just Punjab, but states which have a problem when centrally sponsored schemes funds are not being released or released with a delay by ministries. High bank balance, that is unspent balance which remains in the account in the single nodal agency of the scheme. If there are balance left, obviously till that is spent, the next installment doesn't come. Non-submission of annual action plans by the states. Without action plan, we are not able to see where that central scheme is getting executed. Outstanding utilization certificates. Utilization certificates don't come on time, and sometimes this is sirf Punjab ke liye nahi, sabhi jo jahan vartit hai wahan. Outstanding utilization certificates. जब वो नहीं आता, वो भी नहीं मिलता. Violation of branding and naming guidelines of CSS. ज्यादातर states में ये problem था, जब उनके साथ बात करने में वो भी उनके सिस्टम को बदलने के बाद उनका पैसा उनको चली जा रही है. फिर non-transfer of previously released central share or state share into the SNA account by the state governments. So the single nodal agency account was created after quite a lot of discussion with the states. जहां एक सेंट्रल स्कीम का पैसा सेंटर का शेयर भी है, स्टेट का शेयर भी है. अगर स्टेट का शेयर सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट में आ जाता है, उसी क्षण सेंट्रल का शेयर भी उसमें पहुंच जाता है. अगर स्टेट उनका पैसा उस सिंगल नोडल अकाउंट में डालते नहीं है, सेंटर इंतजार करके देखता रहता है. सेंटर पैसा नहीं दिया, ये आरोप सही नहीं है. जिस मोमेंट आपने सिंगल नोडल अकाउंट में आपका पैसा डालते हो, सेंट्रल पैसा भी उसमें आ जाएगा. मगर बहुत सारे स्टेट इस विषयों को समझने में थोड़ी देर लगी, मगर अभी ठीक चल रहा है उस गाड़ी. So non-remittance of interest accrued in SNA account to the consolidated fund, interest charge होता है वो SNA अकाउंट का. अगर वो इंटरेस्ट ठीक से नहीं जमा होता है, उसके कारण भी डिले हो सकता है. उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, 1,104 crores have been provided to Punjab under Rural Infra Development Fund by NABARD since Aam Aadmi Party came to power back in March 2022. उदाहरण है जहां पैसा गया अंडर सेंट्रल स्कीम. सो मेंबर को मैं याद दिलाना चाहती हूं. सर,
I don't know if member Syed Imtiaz Jalil is in the house. He had raised some issues. SDG has some allocation for defense. But what is our policy on China when we have lost 20 posts? Unka prashna ye tha, sir. He also said about we condemn Israel for violence. And in Narayanpur, close to Aurangabad, schools don't have roof. So there's directly not much of an issue on the supplementary demand for grants. So there is no specific answer that I need to give. Similarly, there are members who have raised issues which तो are नहीं not. है, लेकिन आप खंडन करो इन बातों का, जो आपको लगता है कि गलत हो तो खंडन करो बातों का। ठीक है सर। ऑन रिकॉर्ड जाना चाहिए ना, अगर आपको लगता है। Asking for budget in the external affairs as well as the defense. So what is our policy? What is our policy that needs to be explained to the people? ये आपकी बात, आपका बात का जवाब दे रही है ना, आपने बोल लिया पहले। नो, माननीय मंत्री जी का रिकॉर्ड में जाएगा। सर, ऑनरेबल आपकी मेंबर, बात का जवाब दे रही है ना वह। हाँ, तो आपका बात का जवाब दे रही है। Okay, please. Sir, honorable member, I would like to inform him, there is no restriction on the member from talking on any issue. But this debate, this particular discussion is on the supplementary demand for grants. You have asked me a question on what is the amount you're taking money for defense. Now, what is our policy on China? I will say why I've taken the money for defense. And as finance minister, I'm expected to explain and answer questions related to the supplementary demand for grants. And that's exactly what I'm doing. But beyond that, this discussion today on the supplementary demand for grants focuses on the demand for grants and not on the policy. You may ask the question when relevant, where relevant, and in the time when the discussion happens in this house. Point of order. Point of order. ये क्या है सर? सर, राजमोहन उन्नीतन. मैं मौका दूंगा आपको इनके टेंशन दिन प्लीज. Sir, Rajmohan Unnitan ji, I don't know if he's here. Since he's not here, I wouldn't raise it. नहीं, एक बात बताइए, ये भी कोई अच्छा तरीका थोड़ी है कि बोलकर चले जाए। नो, मैंने व्यवस्था दी है कि जो माननीय सदस्य मंत्री जी के जवाब के टाइम हो उसका ही जवाब दे, मैंने व्यवस्था दे चुकी। तो माननीय मंत्री जी, नो, अध्यक्ष की व्यवस्था है, आप नेता है, प्लीज देना चाहिए ना। चलो, मैं मेंबर्स को भी जनता ने उनको चुनकर भेजा है सदन के लिए। जब बोलते हैं तो सदन में जवाब सुनने के लिए भी बैठना चाहिए। नो सर, एक मिनट सर। राज्य मंत्री थे, इनके राज्य मंत्री थे। नो, मैं भी सुन रही हूँ सर, इधर जो हो रही है MOS भी इधर है और मेरा रिप्लाई राज्यसभा में था। I couldn't have been here, but I am listening, and that is why I'm answering specifically. And if honorable member finds anything which is not pertinent, I am glad to receive that kind of a chiding from the honorable member saying you're not talking about what I spoke or you're talking something different. If I'm not speaking pertinent, you're welcome to raise that issue. But again, honorable member Gogoi tells you, sorry, आप जरा स्पीकर साहब को कह दीजिए। सर, ऑनरेबल मेंबर गोगोई से क्या प्रक्रिया है? मैं आपके आदेश के अनुसार जो मेंबर प्रेजेंट है उनके लिए जवाब दे रही हूं। ये मेरा निर्णय नहीं है, मेरा लिखित रूल नहीं है, स्पीकर साहब के डायरेक्शन है।
उससे आपको आपत्ति है तो प्लीज स्पीकर साहब से बात करिए। मैं कुछ प्रक्रिया नहीं तय कर रही हूं, मैं नहीं तय कर रही हूं इधर प्रक्रिया। ठीक है, हाँ थैंक यू। प्लीज डू दैट। आपने दरखास्त कर ली, अच्छी है, अच्छी बात। लेकिन अपना इसमें अपना सबका मकसद एक ही था और कोई मेरा मकसद नहीं था कि मेंबर बोले और जवाब के समय रहे, ये मेरा विषय है नहीं। हाँ, टाइम पता था कि आज जवाब देंगे, ये भी बता देंगे, अब ये भी बता देंगे ताकि मेंबर्स उपस्थित रहे, अच्छा रहे। बात हो गई जी। अगर मेंबर उपस्थित रहे तो ठीक रहता है, और क्या है। नहीं, मेंबर उपस्थित आप नहीं होता नहीं था। एक बात आप इस मत से, एक बात बताओ, इस मत से सहमत है या नहीं कि समय तय कर देंगे, ये तो बात आपकी मान ली है, लेकिन जो मेंबर्स विषय को उठाता है, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे, उपस्थित रहना चाहिए, रहना चाहिए। टाइम बता देंगे, उपस्थित तो रहना चाहिए उसको। नहीं, टाइम बता देंगे, उपस्थित तो रहना चाहिए ना। मैं गोगोई जी से बात कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि उपस्थित रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बस। माननीय मंत्री जी, ठीक है, ठीक, ओके, या आपका सुझाव से सहमत है। सर, member Khatir Anand had spoken about how unfair treatment is being offered to states on account of perceived inequity in taxes collected vis-a-vis quantum actually devolved to the states, and therefore the allegation is the center is not giving as much as what is being collected from the states. Sir, broadly, all honorable members do appreciate and understand that this is not something which the central government decides. It is a formulation which is given by the Finance Commission, and based on the Finance Commission's recommendation, timely, appropriate amounts are sent to the